यस हाय उमर सर मिस orlean तो मैं बात कर रहा था आई वाज टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन द फॉस्टरिंग ऑफ अ चाइल्ड rearing process of child how child grow day by day how raised how much money they spent on child where born what's the father mother who was the person who coming to meet that child what was the status of that persons who were coming वो कौन लोग थे जो उस बच्चे से मिलने आते थे स्विट्ज़रलैंड में या अमेरिका में coming to meet in Switzerland and America the person what's the status of those persons what's the amount they were possessing in their bank accounts centillions septillion francs we were centillions of Swiss franc and dollars American dollar when we uh, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे मम्मा और पापा के पास सेंटिलियंस ऑफ डॉलर और स्विस फ्रैंक थे और हमारा कोई किसी से लिंक नहीं वी हैव नो कनेक्शन विद एनीवन नो लिंक नथिंग हम किसी से रिलेट नहीं करते वी आर नॉट रिलेटिंग आवर सेल्फ विद एनीवन दिस इज़ द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ सो व्हाट्स द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन तो वो बच्चा पैदा हुआ उसके पास कौन लोग आते थे कौन लोग उस बच्चे से मिलने आते थे उसके फादर मदर के पास कितना पैसा था उनके पास कैसे बच्चे की परवरिश हुई कितना पैसा खर्च हुआ फूड पे क्लॉथ पे हाउ मच मनी दे स्पेंड ऑन फूड क्लॉथ द फूड एंड क्लॉथ्स वर कमिंग फ्रॉम देयर ओन फैक्ट्रीज they have their own servant that's the status of any person they have their own franchises to produce and prepare planes fastest chopper उनके क्या अपने फैक्ट्रियों के बड़े बड़े ग्राउंड प्लांट्स थे जहाँ जहाज़ बनते थे कौन लोग थे वो कौन सा बच्चा था वो तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं फिर अगर आपकी एजुकेशन अच्छी हो फॉर एग्जांपल आपने पब्लिक पॉलिसी में बैचलर प्रोग्राम किया ईटीएच ज्यूरिच यूनिवर्सिटी से यू आर चेकिंग ऑल द पर्सपेक्टिव आप लोग नुक्ते नज़र चेक करते हैं ह्यूमैनिटीज़ या इंसानियत को देखते हैं पढ़ते हैं कॉन्टेम्प्रेरीज प्रोफेशनल्स उनको चेक करते हैं उनकी स्टडी होती है या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट थी यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट से जर्मन लैंग्वेज में या आपने सिविल इंजीनियरिंग की हुई थी कंस्ट्रक्शन में टू फोकस ऑन द लेटेस्ट स्टेट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी strategies corporation target oriented decisions तो व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी या जिस तरह मेरी मदर ने न्यूरो साइंसेज में पीएचडी की हुई थी orlean ने माय मदर कॉन्फर्ड पीएचडी फ्रॉम ईटीएच यूनिवर्सिटी इन न्यूरो साइंसेज सो न्यूरो साइंसेज इज़ अ फील्ड where you are conferring these kinds of brains, perceptions, emotions, evolutions of behavior, information to predict outcomes, predict human behavior in economic context, approaches, decisions, making impact, develop innovative technologies to foster a better understanding, the structure and process of human cognition, modeling understanding of questions, simulations, concept formation, visual perception, natural language acquisitions and processing of human reasoning, human nature, how mind works, how the brain support mental and neural basis of perception emotions,
learning, memory, cognition, development of child, personality development, psychopathology, social interaction considerations, knowledge relates to debates about nature and nurture, free will, consciousness, human difference, self and society. ये वो मैं बात कर रहा हूँ कि ह्यूमन डिफरेंस क्या है, सेल्फ और सोसाइटी का क्या डिफरेंस होता है, क्या स्टैंडर्ड था जब आप पैदा हुए, नर्वस सिस्टम, नर्व सेल्स, सेंसरी सिस्टम्स, ब्रेन डिजीजेस, सिस्टम अप्रोचेस, cortical functions, cellular analysis, receptors, signaling, genetics, neurotrophin signaling, neurogenesis, glia function, epigenetics, neurological mechanism, parametric stimulus. So, what's your education? You able to understand these things? When you confer complete PhD, then you are able to understand what these things are. I am reading this because I conferred PhD and I know what it is. You can read because you are taking education, or maybe someone told you how to read. But it is compulsory for everyone to understand what is this. ये है क्या? You completed police management MST from University of Cambridge, corporate law MCL, creative writing MSc, data intensive science, MPhil in conservation leadership. What you did? Energy fluid mechanics. What you are doing? Study of the text and examinations of culture, setting communicating designs, ideas, constructive manners, craft, evolutions, foundational practices, historical, scene analyzing, book techniques, sequential art, developing storylines, draw the background, comprehend layout, addresses creates. What you are doing? Biometrics, cloud system, blockchains, security, application domains, robot sensing, evolution of behavior, how robot product you predicting the information of decision making to foster better understanding of person and computational simulations, considering the technology of nanoscale in term of communication, sensing, femtoseconds, optics, lasers, millimeter wave, terahertz, accomplishment, signature. So when you will get education, then you able to know what's the thing I am saying, what's this meaning, what's the meaning of these words. सबसे पहले इंसान की पैदाइश, माँ बाप, फैमिली बैकग्राउंड, फिर उसके बारे में ये पता किया जाता है कि उसकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या है. तो इंसान की एजुकेशन और क्वालिफिकेशन मैटर करती है सारी दुनिया में, उसका फैमिली बैकग्राउंड मैटर करता है. इस वजह से लोग प्रेसिडेंट बनते हैं डायरेक्टली और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. लोग आके उनको खुद कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने. ये वो बात है जो हर किसी को समझ नहीं आती और वो किसी से रिलेट नहीं करते. आप खुद सोचे, वो नौकर को घर बुला के चाय पिलाएंगे. दे विल कॉल सर्वेंट टू come and drink tea. Servant will come and he will drink tea. What they will say? Tell. This is what I am saying. This is my narrative. This is the narrative of my father. This is the narrative of my mother. You will not calling. Continue to other videos.